Hello everyone. My name is Rahul Kumar Vishwakarma. I am an assistant professor in Sage School of Commerce, Sage University, Bhopal. Today our subject is auditing and our topic is types of audit opinion. In this session we will discuss what are different types of audit opinion which is given by the auditor after audit in his audit report. So there are four types of audit opinion. First is unqualified opinion, second is qualified opinion, third is adverse opinion, and fourth is disclaimer of option. So let's discuss what is unqualified opinion. Unqualified opinion means clean opinion. You can say when your financial statements are free from any material errors and omissions, this kind of is this kind of report is called clean opinion. अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरह से एरर फ्री है, कहीं उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई एंट्री आप करना भूले नहीं हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं होगी, उस समय ऑडिटर अकाउंट्स ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट देगा. उस रिपोर्ट को आप बोलेंगे अनक्वालिफाइड ओपिनियन. उस रिपोर्ट में ऑडिटर अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन प्रेजेंट करेगा. इट मीन्स your financial statements are totally free from any kind of errors and omissions. This is the best report of audit. Second is qualified opinion. Qualified opinion means there are some major exceptions to the accounting rules, but overall financial statements are fairly presented. Here you can see we have discussed the unqualified opinion where the auditor is giving a report that a company's financial statement is true and fair. Now you can see the qualified opinion. Qualified opinion means when auditor feels that you are doing some mistakes or you are not following the accounting principles or auditing principles. There are some possibilities of errors and mistakes in your accounting, not too much, some mistakes. In that case, auditors gives the report, auditor presents his opinion, is called qualified opinion. Here you can see an audit report is said to be qualified report or a modified report if the auditor report is modified to add emphasis or highlight a matter affecting the financial statement. One of the main reasons for qualifying an audit report or modifying an audit report is if there are concerns to the auditor regarding a going concern problem and the going concern question is not resolved and relevant disclosures have not been made in the financial statements. मतलब थोड़ी बहुत गलतियां हैं जहां फेयरली प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है अकाउंटिंग का, उस केस में ऑडिटर एक रिपोर्ट देगा दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड ओपिनियन. थर्ड इज डिस्क्लेमर ऑफ ऑप्शन. डिस्क्लेमर ऑफ ऑप्शन का मतलब ये होता है जब ऑडिटर के पास प्रॉपर एविडेंसेस ना हो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते समय. ऑडिटर किस बेसिस पे रिपोर्ट प्रेजेंट करे? ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं हैं. इन दैट केस ऑडिटर्स गिव्स द ओपिनियन इस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ऑप्शन भी कह सकते हैं उसको. if there is a limitation on the scope of auditor's work or there is a disagreement with management regarding the usability of the accounting policies selected, the method of their utilization or the adequacy of financial statement disclosure, then an adverse or disclaimer of opinion is used. When an auditor issues an audit opinion that is qualified or adverse or a disclaimer of opinion, a clear description of all the reasons is included in the audit report.
A disclaimer of opinion is expressed by an auditor when possible effect of limitation on the scope of audit is so material and pervasive that the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence. यहाँ पर एक ऑडिटर ऑडिटिंग करने आया है, बट उसके पास प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर वाउचर्स नहीं है, और उसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो क्लियरली डिस्क्राइब कर सके whether the company is following auditing principles or not, whether the company is following accounting principles or not. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है कंपनी के ऊपर, इसीलिए ऑडिटर के लिए भी प्रॉब्लम है कि वो क्लियरली अपना ओपिनियन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. दैट्स वाई he or she is giving a disclaimer of opinion on the basis of the company's financial statement report. Fourth one is adverse opinion. Adverse opinion is expressed when the possible effect of a disagreement with the management is material and pervasive to the financial statements. Hence, the auditor concludes that the qualification of the audit report is not adequate to disclose the misleading nature of the financial statement. In case an adverse opinion is issued, the board of directors of the company are legally bound to submit an explanation to the members of the company. The explanation should inform the members the reason for the adverse opinion. Adverse opinion मतलब खराब ओपिनियन, सबसे ज़्यादा खराब ओपिनियन होता है एडवर्स ओपिनियन. यहाँ ऑडिटर को दिख रहा है कि ऑडिट में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, आपके अकाउंट्स जो बने हैं कंपनी के वो बहुत सारे गलत बने हैं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, प्रिंसिपल्स को, ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है, बहुत सारे फ्रॉड और एरर्स होने के चांसेस दिख रहे हैं. इन दैट केस, और बहुत सारे एविडेंसेस की कमी है, इन दैट केस ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन दैट इज कॉल्ड एडवर्स ओपिनियन. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी.